It's really a pleasure for me to be part of this very special event of the Department of Linguistics. I have been always advocating this with one slogan that if you really want to have a best university, nobody can ask you that who is your registrar or who is your vice chancellor. No. The people will say that what is your academics, what is your research. And registrar has a responsibility that he has to provide the support to everything. Teaching, learning, research. Now you know that in New Education Policy 2020, we are committed to create a very high profile that career of that teaching learning process. I will not go to the details of the NEP, but I definitely feel that I have a bigger responsibility. And then since we are all together, I will be always at call for my heads of the departments. Working for the students will be one of the important that priority for me. Particularly, we are looking for having good hostels and create a good environment for the hostels. If in Jamia Millia can give your best 25 or 30 people who qualify the civil service examination. Why we should not? We have the talented faculty, but we have to create the infrastructure for that. I promise you, all my dear students, my dear scholars, my dear faculty, that I will do all the things which are possible, and everything is possible in the universe. Why not? The only thing that you have to work with sincerity, dedication, and honesty. I promise that I will provide all the three parameters. I work with sincerity, I will work with dedication, and I will work with honesty. So the theme that you have chosen for today, I hope that this is definitely a theme of interest, and the audience will definitely have an interest towards this theme. And as far as linguistics is concerned, it is very close to the science. Yeah. And when we talk, I am basically a student of physics. And basically when we talk about the physics, so I have been talking to you some time back when we talked about the oscillations, if you remember, sir. So it's actually you have the you have the linkage between this various branches of science, not only the physics, but so many things. Because when you talk about the acoustics, you have everywhere. And then the linguistics that you are doing, you are teaching, you are having a research. Sir, it is really a great thing for everyone. But fact of the matter is that we have to create this environment at college level also. I don't know actually right now what has been done at the college level, because so many our good students have a pass out from this college, from this university, and then we have to also see it is everybody's responsibility, not only me but also my head of the department, my colleague, that the talented this output which comes from the university, where they go, because that's very important, because there are job problems. We have to also, it's not only that we have to teach, we have to give the degrees, we have to also go to the public domain, and we have to see that how our good this stuff which comes out from the university gets really engaged in different sectors, both in government as well as private sector. हिंदुस्तानी ज़बानों का मरकज़ी अदारा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस वजारत तालीम हुकूमत हिंद के मातहत एक काबिल कद्र इदारा है। कौमी आजमाइशी खिदमात हिंद नेशनल टेस्टिंग सर्विस उसका एक अहम हिस्सा है, जो ज़बान व अदब के मैदान में हिंदुस्तानी ज़बानों के लिए आजमाइश और तायन कद्र के सरगर्मियों, मवाद की फराहमी और रिसर्च पर मबनी उसूल पर काम करता है। कौमी आजमाइशी खिदमात हिंद नेशनल टेस्टिंग सर्विस आजमाइश और तायनी कद्र के मैदान में हाई स्कूल, प्री यूनिवर्सिटी, जूनियर कॉलेज और डिग्री कॉलेज के उर्दू असातिज़ा के लिए तकरीबन पूरे साल वक्त ब वक्त तरबियती प्रोग्राम के लिए वर्कशॉप या कारगाह का इनेकाद करता रहा है। इस सिलसिले में मकामी सतह पर शहर श्रीनगर के असिस्टेंट प्रोफेसर्स, लेक्चरार्स, टीचर्स और रिसर्च स्कॉलर्स जो उर्दू ज़बान व अदब और लिसानियात के मौजू पर काम कर रहे हैं या दर्स व तदरीस से मुंसलिक हैं, उनके लिए आजमाइश व तायन कद्र और सवाल साजी पर 6 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप मौरखा 19
تا 24 फरवरी 2024 तक बमकाम शोबे लसानियात कश्मीर यूनिवर्सिटी में इनेकाद किया जा रहा है, जो बरोज़ पीर आज से शुरू हो रहा है। ज़बान व अदब में आजमाइश और तायन कद्र और सवाल साजी पर इस 6 रोज़ा तरबती प्रोग्राम और वर्कशॉप में दर्स व तदरीस से मुंसलिक श्रीनगर और उसके गिरदोनवाह के सभी असातिज़ा, ख़वातीन व हज़रात का तहे दिल से इस्तकबाल किया जाता है। लेक्चर सीरीज़ के बाद अमली तौर पर हम सब लोग अक़साम सवालात यानी मारूती और मौज़ूई सवालात पर अपनी निगाहों को मरकूज़ रखेंगे। तदरीस, आमोजिश और आजमाइश तायन कद्र ये सभी एक दूसरे से बाहम मुनहसिर सरगर्मियाँ हैं। इनमें से किसी एक रुकन का न होना या उसका फ़क़दान उन दिगर दोनों सरगर्मियों को मुतासिर ही नहीं करता बल्कि नुकसान भी पहुंचाता है। इस बात से हम सभी लोग बखूबी वाकिफ़ हैं कि तायीन क़द्र तदरीसी अमल और मियार के तयन का एक ताकतवर ज़रिया है, लेकिन इसके बावजूद अमली तौर पर जिस कदर तवज्जो तदरीस और आमोजिश पर दी जाती है उस कदर तायीन क़द्र पर नहीं दी जाती। बल्कि यूँ कहा जाए कि तालीम एक ऐसा मरबूत निज़ाम है जिसमें मकासद, निसाब, तदरीस, आमोजिश और तायीन कद्र ये सब बाहम एक दूसरे से ऐसे मरबूत और हम आहंग हैं कि अगर इनमें से कोई एक शोबा छूट जाए तो हम अपनी तालीमी मकासद को हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि असातिज़ा के माबैन तदरीस और आमोजिश के अलावा ख़ास तौर पर तायीन कद्र पर तवज्जो मरकूज़ किया जाना चाहिए और तायीन कद्र से मुतल्लिक़ उसके मकासद, मवाद और तरीक़ाकार के तमाम मुमकिन नुकात को ज़्यादा से ज़्यादा आम किया जाना चाहिए। हमें बेहद मुसर्रत हो रही है कि आज हम शोबे लसानियात यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की तालीम और ताल्लुम के सब्ज़ार और फ़रहत बख्श अहाते में आजमाइश और तायीन कद्र पर 6 रोज़ा प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं। There are 5 main types of language testing: aptitude, diagnostic, placement, achievement, and proficiency test. Aptitude test. Aptitude refers to a person's capacity to learn, for learning something. Language aptitude test assesses a person's ability to acquire new language skills. Because of the nature of the aptitude test, they are more general than other language tests, and do not focus on a particular language like Urdu or Kashmir or other language. Instead, they assess how quickly and effectively a person is able to learn new language skills. It is just aptitude of language. Another is the diagnostic test. Diagnostic tests are aimed to diagnosing the state of person's ability in certain areas. In this case, their language abilities. Diagnostic tests are typically given at the start of the language learning course or program. On the diagnostic tests, most test takers encounter questions or tasks that are outside the scope of their ability and materials they are familiar with. The results of the tests reveal the strength and the weaknesses in one's language abilities. Having a student's diagnostic test results can help teachers formulate lesson plans that fill the gap in the student's current capabilities. Students can also use diagnostic tests to determine which area they need to work on in order to reach a higher level of proficiency. Third point is placement test. Placement tests, they share some similarities with diagnostic tests. They are used for educational purposes and are administered before a course or program of study begins. Educators and administrators use placement tests to group language learners into classes or study groups according to their ability level. Placement tests can help to determine whether the student needs to take introductory courses or skip a basic introductory course and begin with more advanced course. Fourth is
achievement test. And achievement tests evaluate students' language knowledge to show how their learning has progressed. Unlike diagnostic tests, aptitude tests, and placement tests, achievement tests only cover information of the students should have been exposed to in their studies so far. Achievement tests are typically given after a class completes a certain chapter or unit or at the conclusion of the course. A language teacher may give a final exam to the end of the semester to see how well a student has retained the information they were taught over the course of the semester. Achievement tests are typically graded and are meant to reflect how well the language tester is performing in your language learning strategies. तो नेशनल ट्रांसलेशन मिशन का आगाज़ 2008 में हुआ और वहाँ पर जो है 22 हिंदुस्तानी ज़बानों में यूनिवर्सिटी के 57 डिसिप्लिन्स यानी कि तमाम डिसिप्लिन्स, ठीक है, सिर्फ लिटरेचर, लैंग्वेज एंड लिटरेचर और रिलीजन और तनकीदी किताबें, क्रिटिक्स, इन तमाम ये डिसिप्लिन को छोड़कर तमाम डिसिप्लिन के वहाँ तर्जुमे होते हैं तमाम किताबों के, और वो भी कब, ग्रेजुएशन से लेकर के रिसर्च लेवल तक। वहाँ नेशनल ट्रांसलेशन में एक ट्रेनिंग भी होती है, वो 21 दिन की होती है, आप लोग वहाँ तशरीफ़ ले जा सकते हैं। और वो ट्रेनिंग में हम लोग जो है आपके लिए होस्ट रहने का इंतज़ाम, खाने का इंतज़ाम और आने जाने सब इंतज़ाम मुफ्त का हम करते हैं आपके लिए। आप जा सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं और 21 दिन जो है मैसूर का जो है काफ़ी मैसूर को एंजॉय कर सकते हैं हर तरह से, एकेडमिकली भी और नॉन एकेडमिकली भी। ये हुआ NTM। उसके बाद जो है LDCIL है, लिंग्विस्टिक डाटा कंसोर्शियम ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। यहाँ पर जो है ये तमाम 22 ज़बानों, हिंदुस्तानी ज़बानों के जो है वो प्राइमरी लेवल, जैसे बच्चों को जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वहाँ से लेकर के बहुत हायर लेवल तक, जो सेंटेंसेस अलग अलग डिसिप्लिन के कुछ पैराग्राफ सेंटेंसेस लिए जाते हैं, उसके एनोटेशंस होते हैं और वो फिर डाटा जो है उसको सेल किया जाता है जिस भी पर्पज़ के लिए जो लेना चाहें। तो वो लिंग्विस्टिक डाटा कंसोर्शियम का काम है जो 2008 से उसका भी काम हुआ और वो लगातार जो है उस वहाँ पर मुनहमिक है। और उसके बाद ये भारतवाणी में ये जितने भी हमारे डिजिटल जो टेक्स्ट हैं इसको डिजिटलाइज करके वेबसाइट पे हम प्रोवाइड करते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। तो वो आप वहाँ से तमाम किताबें वो इकट्ठा कर सकते हैं अपनी स्टडी के लिए, मुताले के लिए। अब हम आते हैं नेशनल टेस्टिंग सर्विस इंडिया। नेशनल टेस्टिंग सर्विस इंडिया जिसके लिए आज हम यहाँ मौजूद हैं, और इसके कई वो आबाद हैं। एक तो ये है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट है ना, RD, और कंसल्टेंसी एंड ट्रेनिंग जिसका ये हिस्सा है, कंसल्टेंसी एंड ट्रेनिंग का ही ये प्रोग्राम का हिस्सा है वो, और सर्वे एंड डॉक्यूमेंटेशन और फेलोशिप। ये 4 जो है हमारे अलग अलग डायमेंशन से जहाँ पर हम काम कर रहे हैं। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमारा काम होता है कि टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आज आ रही हैं हमारे सामने, और नए जो नई तहकीक और नई जो है जो चीज़ें आ रही हैं, नए ख़यालात जो आ रहे हैं टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस के तहत, तो उन तमाम चीज़ों को पर हम लोग की नज़र रहती है और उन मवादों को इकट्ठा करके हम लोग किताब की शक्ल में अलग से छापने की कोशिश करते हैं। उसमें से अभी हम लोगों ने एक टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन पर एक टर्मिनोलॉजी की किताब छापी। मतलब हम लोग किताब छापने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें 3000 लगभग नहीं 3000 नहीं बल्कि 4500 जो है टर्म्स जो है उसमें इंक्लूड किए गए हैं, और वो काफ़ी मुफीद है। और वो ऐसी किताब है कि हर वसातज़ा को उस किताब को अपने पास रखना चाहिए ताकि उनको मतलब किसी चीज़ की ज़रूरत हो। जैसे मान लीजिए कि टेस्टिंग क्या है, हम टेस्ट पेपर जो डेवलप करते हैं कैसे करते हैं, है ना, उसके क्या जो है लवाजमात हैं, हमें कैसे करने चाहिए, पढ़ाने के कितने तरीके हैं, कैसे पढ़ाने चाहिए, क्या अप्रोचेस हैं, कैसे पढ़ाने चाहिए, ये सारी चीज़ें वहाँ पर उस किताब में मौजूद हैं। The
department has always been striving to update our curriculum according to the market and according to the needs of the learners and the current trends. And as far as testing and evaluation is concerned, my colleagues are here and we teach language teaching as a paper, language learning, language acquisition, and this component is definitely covered over there. And the department has always been trying to be active as far as academics is concerned, and so far we have organized many international and national conferences, symposia, and workshops. And the CIL Mysore has been collaborating with us, I believe, from last 2 or 3 decades. Many programs we have collaborated together, and as is equal today, again, we are collaborating this program, as Salik Saab said, in collaboration with CIL Mysore. And I should personally, as head of the department, thank the NTS, Dr. Pankaj, he has not come here, and other people associated with it, Dr. Salik, Dr. Abdul Halim, and Dr. Saddam, for choosing our department as a venue for this.